यस मैम। हाँ, यस मैम। तो आपका स्टेप नंबर 2 देखिए, आपने ये सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू, यहां तक क्लियर है सबको? यस। Yes. Now write down step number 3. Now I write down step number 3. Now step number 3 में ये जो लास्ट प्रोडक्शन है, पहले दो प्रोडक्शन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1 में आपने ये दो प्रोडक्शन नंबर 1 सॉल्व करके आपको ये दो प्रोडक्शन ऑलरेडी मिल चुके हैं। स्टेप नंबर 2 में बी का वैल्यू, बी जो ए यूज कर रहा था वो वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। So that is step number 2. Now write down step number 3. You will be now eliminating left recursion from the production B, क्योंकि पहले दो solve हो चुके हैं। Now you will eliminate left recursion from this particular production. Now eliminate left recursion from this particular production. So start comparing this production. What are the values you will get? A will be equal to B, correct? Is A equal to B? Start comparing. B goes to B, or B A dash B, or C A dash B, or D. So compare with A goes to A, alpha or beta. In the first production A का वैल्यू B है, अल्फा का वैल्यू स्मॉल b है। In the second production A का वैल्यू B है, अल्फा का वैल्यू है A dash B, A dash B। Do you agree? हाँ या ना? यस मैम। यस। नेक्स्ट, बीटा का वैल्यू, देर आर टू बीटा वैल्यूज C A dash B and small d. So look at this particular production. I am solving this. पहला ये वैल्यू है, so A का वैल्यू is equal to B and I am solving this particular production. So A value is equal to B, alpha value is B. ठीक है, अब आप सेकेंड प्रोडक्शन सॉल्व करोगे तो A का वैल्यू भी अगेन इज B and alpha ka value in this case, so you have another value of alpha. That another value of alpha is this one. समझा? और बीटा का वैल्यू क्या बनेगा? ये बीटा है और डी बीटा है। समझा? समझा या नहीं समझा ये प्रोडक्शन? Do you agree to this? यस मैम। Do you agree? तो ये दो प्रोडक्शन में बी था ना, तो इसके लिए ये ए इक्वल टू बी है और ये अल्फा बना और इसमें भी ये अल्फा बना। यहाँ पे ना तो अल्फा है ना तो ए है, तो ये वैल्यू बीटा है और ये भी वैल्यू बीटा है। इसके लिए बीटा के दो वैल्यूज है, ये वैल्यू अल्फा का एक है, ये वैल्यू अल्फा का एक है, और ये बी और ये बी ये ए का वैल्यू है। क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ, नाउ अप्लाई, नाउ रिमूव द लेफ्ट रिकर्शन। तो फॉर्मूला क्या है लेफ्ट रिकर्शन का? सो इट विल बी बेसिकली, यू विल गेट, अगर लेफ्ट रिकर्शन अप्लाई किया तो इट विल बी A goes to, so B will go to A value, B goes to beta, beta has two values, so the first value of beta, these are the two values of beta, so I copy it here. So B goes to C A dash B, B dash, or B goes to B dash, correct? बराबर ना? यस। A goes to beta A dash आएगा और सेकेंड प्रोडक्शन आपका है beta dash goes to alpha. Alpha का वैल्यू, there are two values of alpha. The first value of alpha I am taking it as B A dash or मैम बी डैश। sorry, B B dash or
The next value of alpha is a dash. The next value of alpha is a dash b or b dash, and the last value is your epsilon value. The last value is your epsilon value. समझ में आया? तो वही प्रोडक्शन मैंने इधर लिखे हैं. So now eliminating the left recursion from the production B, we get all this production. So this is how indirect left recursion is being removed. This is how indirect left recursion is being removed. Therefore, the last statement, if you see, this is the final grammar of the left recursion form. This is the final grammar of the left recursion form. Is the indirect left recursion clear to you? Yes. Yes. Yes, ma'am. So this is how indirect and direct left recursions are being removed. If the recursion concept clear to everybody, this is very important क्योंकि जो LR parser family बनाने वाले हैं या जो next LL1 family हम बनाने वाले हैं वो left recursion के ऊपर ही चलने वाले हैं. So please, the more you solve the example, the more you will be clear. I am not doing anything here. I am just comparing with the standard statement and replacing with the standard formula that is being given to you. Is that clear? How to eliminate indirect left recursion and how to identify what is an indirect left recursion? Yes, ma'am. Yes. So, if everything is clear, there are a couple of examples waiting for you. Please copy this particular example. There are two examples which are being highlighted here. So copy these two examples quickly and you have to tell me what is the solution of these two examples. What is the solution of these two examples? You have to tell me what is a solution of these two examples. You have to eliminate left recursion into this and tell me what will be the solution of this particular two example. Test whether it is direct, indirect, जो भी है आप टेस्ट कीजिए और बताइए कि ये indirect left recursion को जाता है या नहीं जाता है. Please apply the logic. Please be careful while solving it and please don't copy. Your attempt to the problem is important. Solution is not that important. Yeah? Yes, ma'am. So tomorrow we will see the solution of this and tomorrow we will start making two types parser, that is recursive descent parser and LL1 parser. Now remember two important things for tomorrow's lecture. Tomorrow when we will be doing an LL1 parser, क्योंकि recursive descent parser में ज़्यादा कुछ नहीं करना है. Tomorrow when we'll be doing a LL1 parser, as I'll show you, there are two important functions to be calculated. There are two important functions. First function is called as an first and the second function is called as an follow. So if you miss tomorrow's first and follow calculation, then you forget the entire LR parser family. अगर आपको फर्स्ट और फॉलो कैलकुलेट करने को नहीं आया तो आप कंप्लीटली एलआर पार्सर फैमिली को भूल जाओ क्योंकि पूरा एलआर पार्सर फैमिली फर्स्ट और फॉलो फंक्शन पे ही वर्क करता है. सो बेयर इन माइंड, टुमारो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. Things to be done, we have to calculating first and follow function. So please do this particular homework and tomorrow is the most important calculation of first and follow function. So tomorrow we will meet at 11:30 and complete the remaining part. Please do your homework. Those who have not yet done, please do it. Only few people are posting there, though many students attend the lecture. However, only few are posting it sincerely. If the remaining are not doing it, it is their loss when it comes to actual problem solving in exam. Is that clear? So, thank you very much. Tomorrow at 11:30. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Tomorrow at 11:30. Thank you, ma'am. Thank you.